A very good morning. Today we are going to learn something about probability. और जैसे मैं अगर पूछूंगा आपसे कि प्रोबेबिलिटी क्या होता था तो सबसे पहला जवाब मिलेगा सभी की तरफ से कि हाँ, प्रोबेबिलिटी जो होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस डिवाइड बाय टोटल आउटकम्स। यानी इसी कॉन्सेप्ट को हम क्या करेंगे, आगे लेते हुए बढ़ते हैं। और क्लास 12th में हम जब बात करते हैं तो इवेंट्स के बारे में बात करने स्टार्ट करते हैं तो बोलते हैं कि दो इवेंट्स हैं ए और बी और ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है या म्यूचुअली एग्जॉस्टिव है। तो जब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की बात करते हैं ए और बी के बीच में, तो इट मींस दैट इफ वी आर टेकिंग ए एंड बी and we'll just check the elements of A and elements of B. Example, if I'm throwing a die, then the sample space is 1, 2, 3, 4, 5, 6. And if I'm saying A event, I'm defining as then even number is occurring, and B I'm saying odd number is occurring. Then A intersection B, I'm comparing A intersection B means odd number 1, 3, 5, even number 2, 4, 6. If I say what is the intersection, then you will say 5. There is no intersection. So these two events are mutually exclusive. Now I will talking about exhaustive. What is means exhaustive events? A and B are exhaustive events means if you are taking union A union B, if it becomes sample space, मतलब A और B का यूनियन लिया तो क्या बन गया, सैंपल स्पेस। तो ये क्या बन जाएगा, एग्जॉस्टिव इवेंट्स। जैसे अभी मैंने लिया A ऑड नंबर है, B क्या है, इवन नंबर है। तो जब मैंने यूनियन लिया तो क्या बन गया, 1 2 3 4 5 6 बन गया। यानी 1 2 3 4 5 6 की बात करें तो ये क्या बन गया, एक सैंपल स्पेस। तो सोचिएगा, मैंने दो इवेंट्स बोला ए और बी, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का एक टर्म यूज किया और एक एग्जॉस्टिव का टर्म यूज किया। तो एक्सक्लूसिव में बोल रहा हूं कि इंटरसेक्शन 5 हो जाए और एग्जॉस्टिव में बोला मैंने कि सैंपल स्पेस हो जाए यूनियन लेने पे। अब थोड़े और बात करते हैं डिपेंडेंट इवेंट्स और इंडिपेंडेंट इवेंट्स। अब डिपेंडेंट इवेंट्स क्या है और इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या है, तो देखिए क्या है कि जैसे एक बॉक्स है, उसमें दो रेड है और एक ब्लैक है, बॉल है। मैंने एक बॉल को ड्रॉ किया और कहा कि वो रेड आना चाहिए। अगर उस मैंने बॉल को उठा के साइड रख दिया, यानी दोबारा से बॉक्स में नहीं रखा, एंड अगेन आई आस्क यू कि सेकंड बॉल ड्रॉ इज रेड, दो रेड दो ब्लैक, then this probability, the next probability, let's consider the next probability I'm mentioning E2 and first one red draw as E1. Then E2 will become dependent events. Why it will become? Because now sample space, when it was two red and two black, now the sample space is three ball only. So these E1 and E2 are dependent events. Now if I tell let's two red two black, I'm drawing one ball red, I'm checking the color, okay, and again replace it in that box. Then again I am drawing one ball and I am saying its probability should be red. Then again you will say that you will say these two events are independent events because probability of E2 doesn't depend on probability of E1. How? Because you have replaced the ball. But in the first case, you does not replace, so the sample space are changing. So E1 and E2, the terminology which we will use it independent and dependent. Independent you come to know, dependent also you come to know, mutually exclusive you also come to know, and exhaustive events also. Let's go to the multiplication theorem. What is multiplication theorem? If two events are simultaneously occurrence, what is the probability? How it will be mentioned? Let's suppose one event A and then B is occurring. And if first A is occurring, then B is occurring. So A and B are independent and A and B are dependent. If it is dependent, let's suppose, means
dependent, you come to know. I am drawing a ball from a box. If I replace, then the second events which will occur, both events are independent. But if I doesn't replace in the box, then the second events and the first events are dependent. So multiplication theorem says PA intersection B, which means simultaneously occurring of two events A and B, which can be written as equal to P of A into P B slash A. If it is dependent, then we are writing B by A. But when it becomes independent, the P of A intersection B will become P of A into P of B.